हेलो नमस्कार वेलकम करुच्ची आपण मानकु आउ एक नुआ वीडियो को आज वीडियो रे डिस्कशन करिबा गतकाली आपण माने जानिछंती मे 9 तारिख रे शेष होइतिबा सीपेट 2026 रो पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन कोन आसीतला आ पॉलिटिकल साइंस रो आंसर कि आज हम डिस्कशन करिबा जेहेतु ए पर्यंत ऑफिशियल आंसर कि आसीनी तो कोन रहितला क्वेश्चन कोन रहि परबो आंसर कि ताहा जे हम डिस्कशन करिबा डिटेल जो 100 टी क्वेश्चन दिला ताको आज हम डिस्कशन करिबा एक्सपेक्टेड आंसर फॉर ऑल द क्वेश्चंस डिस्कशन करिबा आ ता सहित आपण माने कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली जणिबे आउट ऑफ 100 आपण एक्सपेक्टेड केते स्कोर करिसंती तो देरी न करी चलंतु आरंभ करिबा सीपेट 2026 रो पॉलिटिकल साइंस आंसर की ओके तो प्रथम क्वेश्चन आपनको स्क्रीन आगे मु रखुची जो क्वेश्चन आपनको पचारिथिला पॉलिटिकल साइंस सीपी 2026 रो कोन क्वेश्चन थिला हु डिस्क्राइब्ड फ्रीडम एज द साइलेंस ऑफ द लॉज हु डिस्क्राइब्ड फ्रीडम एज द साइलेंस ऑफ द लॉज ऑप्शन ए जॉन लॉक ऑप्शन बी थॉमस हॉब्स ऑप्शन सी एंटोनियो ग्राम्स्की ऑप्शन डी जे रूसो तो जॉन लॉक थॉमस हॉब्स एंटोनियो ग्राम्स्की जे रूसो इमानक मध्यरु हु डिस्क्राइब्ड freedom as the silence of the lodge. Okay, तो क्वेश्चन नंबर 1 ना करेक्ट आंसर होची ऑप्शन बी थॉमस हॉब्स described freedom as the silence of the lodge. Okay, क्वेश्चन नंबर 1 पर क्वेश्चन नंबर 2 कोन पचारुची ना formal equality before the law implies that formal equality before the lodge implies that first option कहूची custom override law, option B only the majority holds the privileges, option C each individual is entitled to be treated equally by the rule, ऑप्शन डी लॉज शुड गारंटी ओनली इक्वल इनकम जो क्वेश्चन नंबर 2 पाई करेक्ट आंसर आपको बाछवा को पड़िबो जे क्वेश्चन आपको पचारिथिला फॉर्मल इक्वालिटी बिफोर द लॉ इंप्लाइज दैट ओके तो क्वेश्चन नंबर 2 रा करेक्ट आंसर होची ऑप्शन सी फॉर्मल इक्वालिटी बिफोर द लॉ implies that each individual is entitled to be treated equally by the rules. Okay, क्वेश्चन नंबर 2 पर बर्तमान आम नेक्स्ट क्वेश्चन आड़ को जीवा क्वेश्चन नंबर 3 कौन पचारुची आपण स्क्रीन आगे मु क्वेश्चन नंबर 3 रखुची क्वेश्चन नंबर 3 जो क्वेश्चन आपण को पचारुची बेसिक नीड अकॉर्डिंग टू सोशल जस्टिस इंडिकेट्स बेसिक नीड अकॉर्डिंग टू सोशल जस्टिस इंडिकेट्स ऑप्शन ए वांट्स, ऑप्शन बी नेसेसिटी, ऑप्शन सी प्रेफरेंसेस, ऑप्शन डी डिजायर. ओके तो क्वेश्चन नंबर 3 रो करेक्ट आंसर होची बेसिक नीड अकॉर्डिंग टू सोशल जस्टिस इंडिकेट्स नेसेसिटी. ओके एटा थिला क्वेश्चन नंबर 3 रो करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 4 कोन पचारिची हु स्टेटेड फ्रीडम as expansion of human capacity, who stated freedom as expansion of human capacity, option A John Locke, ऑप्शन बी अमर्त्य सेन, ऑप्शन सी आडम स्मिथ एवं ऑप्शन डी रॉबर्ट नॉजिक हु स्टेटेड फ्रीडम as expansion of human capacity. ओके तो क्वेश्चन नंबर 4 करेक्ट आंसर होची अकॉर्डिंग टू अमर्त्य सेन, अकॉर्डिंग टू अमर्त्य सेन freedom as expansion of human capacity. Question number 4 ପରେ question number 5 कोन पचारिछि who remarked positive freedom consists of being one's own master, who remarked that positive freedom consists of being one's own master. तो फर्स्ट ऑप्शन कहूछि इजाई बर्लिन, सेकंड ऑप्शन बेंथाम, थर्ड ऑप्शन जॉन लॉक एवं फोर्थ ऑप्शन कहूछि थॉमस हॉब्स. तो क्वेश्चन नंबर 5 आपण मानक पई रहउची हु रिमार्क दैट पॉजिटिव फ्रीडम कंसिस्ट ऑफ बीइंग वन्स ओन मास्टर. ओके तो क्वेश्चन नंबर 5 रो करेक्ट आंसर होची अकॉर्डिंग टू इजाई बर्लिन पॉजिटिव फ्रीडम कंसिस्ट ऑफ बीइंग वन्स ओन मास्टर. ओके क्वेश्चन नंबर 5 पर क्वेश्चन नंबर 6 कोन पचारुची हु प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस in an egalitarian perspective, who principle distributive justice is an egalitarian perspective, option A Adam Smith, option B Dr. B.R. Ambedkar, option C John Rawls एवं option D Robert Nozick. ओके तो क्वेश्चन नंबर 6 रो करेक्ट आंसर होची आपण मानक पई अकॉर्डिंग टू जॉन रॉल्स distributive justice is an egalitarian perspective. Okay, John Rawls principle distributive justice is in an egalitarian
perspective. Okay, in an egalitarian perspective. Question number 6 पर वर्तमान question number 7 देखिबा. तो question number 7 को मु आपनको स्क्रीन आगे को आणुची. question number 7 आपनको पचारुची. question number 7 रहिला. Which of the following pair is not correct? गोटे लिस्ट रे ऑथर ना देला आ गोटे लिस्ट रे बुक ना देला आपनको आइडेंटिफाई करिया को पड़िबो कोटा गोटे इनकरेक्ट. ओके, ऑप्शन ए रहउची बी.आर. आंबेडकर, ऑप्शन बी बी.आर. आंबेडकर सहित एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जॉन रॉल्स का सहित ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, ऑप्शन सी रहउची रॉबर्ट नजिंग का सहित अनार्किस्ट स्टेट एंड यूटोपिया, से भाबरे ऑप्शन डी रहउची डेविड मिलर का सहित कल्चर एंड इक्वालिटी. तो को ऑप्शन टा करेक्ट आपनको आइडेंटिफाई करिवार अछि. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 नो करेक्ट आंसर होची आपण मानको पई. देखो डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर एनिहिलेशन कास्ट ठीक अछि, जॉन रॉल्स ए थ्योरी ऑफ जस्टिस करेक्ट अछि, रॉबर्ट नजिक अनार्किस्ट स्टेट एंड यूटोपिया करेक्ट अछि, किंतु डेविड मिलर को सहित कल्चरल एंड इक्वालिटी करेक्ट नहीं. तो करेक्ट आंसर होची 8 काहे ना कल्चरल एंड सोसाइटी कल्चर एंड इक्वालिटी जो बुक अछि ताको ब्रियन बेरी ही लिखिथिले. तो करेक्ट आंसर आपण मानको पई होची ऑप्शन डी. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 पर आम नेक्स्ट क्वेश्चन आड़ को जीवा. क्वेश्चन नंबर 8 कौन पचारुची ब्रियन ब्यारी जे आमर अच्छा से ही लिखिं कल्चर एंड इक्वालिटी. क्वेश्चन नंबर 7 पर नेक्स्ट क्वेश्चन आड़ को जीवा. क्वेश्चन नंबर 8 आपन को कौन पचारि गत काल क्वेश्चन आम डिस्कसन करुचे. क्वेश्चन नंबर 8, social exclusion differs from poverty because social exclusion differs from poverty because option A, it refers only to lack of income and material deprivation, option B, identify the relationship and procedure that prevent participation, option C, it is confined primarily to rural and underdeveloped regions, option C, it measure deprivation exclusively in terms of consumption levels. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 रा करेक्ट आंसर होची सोशल एक्सक्लूजन डिफर्स फ्रॉम पॉवर्टी बिकॉज इट आइडेंटिफाइज द रिलेशनशिप एंड प्रोसीजर्स दैट प्रिवेंट पार्टिसिपेशन. ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पर क्वेश्चन नंबर 9 कौन पचारुची फोर्स मेजर मीन्स. फोर्स मेजर मीन्स कौन पचारुची ऑप्शन ए सुपीरियर स्ट्रेंथ ऑफ irresistible coercion, option B, flexibility in power, option C, transfer of sovereign authority during an emergency, option D, judicial review of executive action. Okay, question number 9 no correct answer होची option A. Okay, question number 10 कौन पचारिथिला who considered freedom as the collective endeavor. Who considered freedom as collective endeavor, option A रहिथिला रूसो, option B हॉब्स, option C लॉक एवं option D मिल. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 रो करेक्ट आंसर होची आपण मानको पई अकॉर्डिंग टू रूसो फ्रीडम एज ए कलेक्टिव एंडियोवर. ओके, क्वेश्चन नंबर 10 पर वर्तमान आम नेक्स्ट क्वेश्चन आड़ को जीवा. क्वेश्चन नंबर 11 कौन रोची आपण स्क्रीन आगे क्वेश्चन नंबर 11 मु रखुची. तो क्वेश्चन नंबर 11 आपण को पचारुची identify which of the following views is not consistent with J.S. Mill's conception of liberty. Option A, liberty of thought and discussion, option B, absence of constraint, option C, limits of authority over an individual's action, option D, principle of individuality. Okay, तो क्वेश्चन नंबर 11 रो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन बी absence of constraint is not consistent with J.S. Mill's conception of liberty. Question number 12 कौन पचारिछि ना the central principle of socialism is. The central principle of socialism is option A, institution of private property, option B, individual freedom, option C, free market competition, option D, reduce or remove economic inequalities. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 रो करेक्ट आंसर होची आपण मानको पई द सेंट्रल प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म इज रिड्यूस और रिमूव इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज. ओके, क्वेश्चन नंबर 12 पर क्वेश्चन नंबर 13 कोन पचारिछि हु आर्ग्यूड दैट capitalism contains the seeds of its own destruction. Who argued that capitalism contains the seeds of its own destruction. Option A, Adam Smith, option B, Karl Marx, option C, Friedrich Engels, ऑप्शन डी माओ जेडंग. तो आडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजेल्स, माओ जेडंग एमानक मध्यरु की आर्ग्यू करिथिले कैपिटलिज्म कंटेन्स द सीड्स ऑफ इट्स ओन डिस्ट्रक्शन. ओके, क्वेश्चन नंबर 13 नो करेक्ट आंसर होची कार्ल मार्क्स. ओके,
क्वेश्चन नंबर 13 पर आम नेक्स्ट क्वेश्चन आड़ को जा क्वेश्चन नंबर 14 कौन पचारि तो आपण स्क्रीन आगे रखुची क्वेश्चन नंबर 14 तो क्वेश्चन नंबर 14 आपण को पचारुची क्वेश्चन नंबर 14 okay. Procedural justice is primarily concerned with question number 14 पचारुची ऑप्शन ए moral dissent, ऑप्शन बी equality of outcome, option C equal distribution of resources, option C fairness in decision making processes. Okay, the question number 14 na correct answer ହେଉଛି procedural justice is primarily concerned with fairness in decision making process. Okay, question number आमे देखुथिले 14 तापर क्वेश्चन नंबर 15 कोन पचारुची आपनक स्क्रीन आगे मो क्वेश्चन नंबर 15 रखिछि जो क्वेश्चन पचारुची who indicated fear and necessity motivates human nature that impels them towards liberty. Who indicated fear and necessity motivates human nature that impels them towards liberty. Option A John Locke, option B Thomas Hobbes, option C Max Weber, option D T.H. Green. Okay, the question number 15 no correct answer आपण मानक पई रहूची according to Thomas Hobbes fear and necessity motivates human nature that impels them towards liberty. Question number 15 ପରେ question number 16 कोन पचारुची who evaluates the who evaluates behavioralism as a protest movement within political science. Who evaluates behavioralism as a protest movement within political science. Option A Robert A. Dahl, option B Perry Anderson, option C David Easton এবং option D Ernest Marker. Okay, the question number 16 na correct answer होची according to David Easton বা ডেভিড ইস্টন ইভালুয়েটস বিহেভিয়ারিয়ালিজম আজ এ প্রোটেস্ট মুভমেন্ট উইদিন পলিটিকাল সাইন্স. ওকে, क्वेश्चन नंबर 16 ପରେ ଆମେ क्वेश्चन नंबर 17 ଦେଖିବା କ'ଣ ପଚାରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ. ତ क्वेश्चन नंबर 17 ରହୁଛି क्वेश्चन नंबर 17 which of the pair is incorrect. ଆପଣଙ୍କୁ ଅଥର ଆଉ ବୁକ୍ସ ର ଲିଷ୍ଟ वन लिस्ट ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ଅଥର करेक्ट इनकरेक्ट आपको आइडेंटिफाई करिया पड़िबो. ऑप्शन ए कहूची ग्राहम वालस तांको बुक रो ना ह्यूमन नेचर एंड पॉलिटिक्स, ऑप्शन बी आर्थर बेंटली तांको बुक रो ना दउची द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, ऑप्शन सी वालर लिपमैन तांको बुक रो ना दउची पब्लिक ओपिनियन, ऑप्शन डी रहउची स्टुअर्ट ए राइस तांको बुक रो ना दउची ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स. तो ये जो चारोटी बुक और चारोटी ऑथर ना देला कोटा इनकरेक्ट आपनको आइडेंटिफाई करिबार अछि. ओके, तो आपनकर ग्राहम वालस ह्यूमन नेचर एंड पॉलिटिक्स करेक्ट अच्छे, आर्थर एफ बेंटली द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट ठीक अच्छे, लिपमैन पब्लिक ओपिनियन करेक्ट अच्छे, किंतु स्टुअर्ट ए राइस जोटा अच्छे ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स एटा इनकरेक्ट अच्छे कारण आम जानी हारोल्ड जे लास्की आमर लिखी ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स. ओके, तो करेक्ट आंसर 17 नंबर पाई ऑप्शन डी. ओके, क्वेश्चन नंबर 17 पर क्वेश्चन नंबर 18 देखिबा कोन पचारुछि आपनक स्क्रीन आगे क्वेश्चन ऑलरेडी मु रखि सारिछि. क्वेश्चन नंबर 18 कोन पचारुछि among the following which political scientists don't belong to the Chicago School of Behavioral Political Science. Among the following which political scientists do not belong to the Chicago School of Behavioral Political Science. Option A कहूछि Harold Laswell, option B Pareto, option C Key এবং option D Herbert Simon. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18 नो करेक्ट आंसर होछि आपण मानक पाई Pareto. Wilfredo Pareto don't belong to the Chicago School of Behavioral Political Science. आपनकर हारोल्ड लास्वेल हुंतु, वीओ की हुंतु, हर्बर्ट साइमन हुंतु, एमाने समस्त चिकागो स्कूल ऑफ बिहेवियरल पॉलिटिकल साइंस टू बिलोंग्स करूछन्ते, किंतु एक्सपेक्ट विल्फ्रेडो पारेटो. ओके, क्वेश्चन नंबर 18 पर क्वेश्चन नंबर 19 कोन पचारुछि which of the following slogans is mostly closely associated with post behavioralism. Question option A रहउछि stability and order, option B action and relevance, option C system in politics, option D knowledge for its own sake. Okay, तो क्वेश्चन नंबर 19 correct answer होछि action and relevance is mostly
closely associated slogan with post behavioralism. Question number 19 ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन ଦେଖିବା क्वेश्चन नंबर 20 କ'ଣ ପଚାରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଗରେ क्वेश्चन नंबर ମୁଁ 20 ରଖୁଛି क्वेश्चन नंबर 20 ପଚାରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ओके क्वेश्चन नंबर 20 कौन रहुची आइडेंटिफाई द incorrect statement concerning traditional political theory. Identify the incorrect statement concerning traditional political theory. Option A, traditional political theory avoids historical analysis. Option B, traditional political theory is largely normative. Option C, traditional political theory generally focused on institutions and constitutions. Option D, traditional political theorists prefer deductive reasoning. ओके तो क्वेश्चन नंबर 20 रो करेक्ट आंसर होची आपण मानक पई ए जो तीनोटी स्टेटमेंट अछि ठीक अछि गोटी इनकरेक्ट होची ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी अवॉइड्स हिस्टोरिकल एनालिसिस अवॉइड्स करे ना सेटा होची आपण पई इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 20 परे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखबा क्वेश्चन नंबर 21 कोन होची आपण को स्क्रीन आगरे मो क्वेश्चन नंबर 21 रखिछि हु अमंग द फॉलोइंग इज most closely associated with advocating the philosophical approach in political theory. Option A, Sabine. Option B, Harry Eckstein. Option C, Kathleen. এবং option D, Leo Strauss. Okay, तो question number 21 correct answer होची mostly among the following who mostly associated with advocating the philosophical approach in political theory, that is Leo Strauss. ओके क्वेश्चन नंबर 22 कौन पचारुची हु रोट पॉलिटिकल लिबरालिज्म गोटे बही अछि जो बहीर ना हेउची पॉलिटिकल लिबरालिज्म ताकू तार ऑथर किए थिले जॉन ड्यूए हारोल्ड लास्की इमानुएल कांट जॉन रॉल्स ओके तो पॉलिटिकल लिबरालिज्म बुक रिटन बाय जॉन रॉल्स क्वेश्चन नंबर 22 परे आमे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 23 कौन रहिची क्वेश्चन नंबर 23 आपन को स्क्रीन आगे मु रखुची क्वेश्चन नंबर 23 जो क्वेश्चन आपन को पचारुची क्वेश्चन नंबर 23 who articulated justice in society is a reflection of justice in mind. क्वेश्चन नंबर 23 बढ़िया गोटे कोटेशन देखंतु justice in society is a reflection of justice in mind. रॉल्स प्लाटो थॉमस एक्विनास अमर्त्य सेन ओके तो ए डेफिनेशन कहार थिला प्लाटोन को डेफिनेशन थिला जस्टिस इन सोसाइटी इज रिफ्लेक्शन ऑफ जस्टिस इन माइंड क्वेश्चन नंबर 24 कौन पचारुची आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट प्लाटो बिलीव्ड इन स्टेट कंट्रोल एजुकेशन ऑप्शन बी प्लाटोस एजुकेशन एम्ड एट मोरालिटी ऑप्शन सी प्लाटोस फेवर्ड द एक्सक्लूजन ऑफ वुमेन फ्रॉम हिज स्कीम ऑफ एजुकेशन ऑप्शन डी प्लाटोस एजुकेशन वाज मेंट फॉर आर्टिसंस एज वेल एज peasants ओके तो क्वेश्चन नंबर 24 जोटा हमर थिला इनकरेक्ट स्टेटमेंट कोटा रहउची इनकरेक्ट ऑप्शन सी आउ सब जंक करेक्ट अछि केवल इनकरेक्ट होची ऑप्शन सी प्लाटो फेवर द एक्सक्लूजन ऑफ वुमेन्स फ्रॉम हिज स्कीम ऑफ एजुकेशन एटा आपनकर इनकरेक्ट अछि क्वेश्चन नंबर 25 कोन पचारुची आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्रिटिसिज्म ऑफ अरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑप्शन ए इट इज considered not fully applicable to the modern nation states. Option B, he regarded democracy as the best form of government. Option C, his scheme classified forms of government rather than modern territorial states. Option D, his classification is based primarily on the number of rulers rather than qualitative distinction. Okay, तो question number 25 रो आपण मानकर करेक्ट आंसर होची ऑप्शन बी he regarded democracy as the best form of government is incorrect statement regarding the criticism of Aristotle. Okay, question number 25 पर हमें next question आडको जिबा question number 26 आपण मानकु कोन पचारुछि ओके तो क्वेश्चन नंबर 25 पर वर्तमान क्वेश्चन नंबर 26 देखिबा कोन पचारुछि आपण मानकु अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल द परवर्टेड फॉर्म ऑफ किंगशिप इज अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल द परवर्टेड फॉर्म ऑफ किंगशिप इज ऑप्शन ए पॉलिटी ऑप्शन बी अरिस्टोक्रेसी ऑप्शन सी डेमोक्रेसी एवं ऑप्शन डी tyranny polity aristocracy democracy tyranny among the following options according to Aristotle the perverted form of kingship is okay तो क्वेश्चन नंबर 26 रो करेक्ट आंसर होची आपण मानक पई
Tyranny is the perverted form of kingship according to Aristotle. Question number 27 कौन पचारुछि देखिबा. तो क्वेश्चन नंबर 27 आपन को पचारुछि who indicate who indicated a strong plea for an absolute monarchy. Option A Hobbes, option B Machiavelli, option C Aristotle এবং option D Locke. Who indicated a strong plea for an absolute monarchy. Okay, तो क्वेश्चन नंबर 27 नो करेक्ट आंसर होछि आपण मानक पाई according to Hobbes or Hobbes indicated a strong plea for an absolute monarchy. Question number 28 कौन कहूछि आपण मानक पाई among the political philosopher who was pioneered his letters on toleration. Among the political philosophers who has pioneered his letters on toleration. Option A Hobbes, option B Locke, option C Mill এবং option D Marx. Okay, the question number 28 रो correct answer होछि आपण मानक पई according to or Locke. Okay, Locke pioneered his letters on toleration. Okay, question number 26 परे हमें question number 28 परे हमें next question आडको जिबा. question number 9 कोन नउछि आपनक स्क्रीन आगरे म question number 9 रखुछि जो question आपनको पचरुछि. question number 29 who said man was basically good and it is only the wrong action which make him wicked. Who said man was basically good and it is only the wrong actions which make him wicked. Option A Locke, option B Rousseau, option C Lenin এবং option D Mill. Among the following who said man was basically good and it is only the wrong action which make him wicked. Okay, the question number 29 correct answer होछि Rousseau. Rousseau said man was basically good and it is only the wrong action which make him wicked. Question number 29 परे question number 30 कौन पचारुछि. Now the central theme of behavioralism doesn't adopt. The central theme of behavioralism doesn't adopt. Option A objectivity, option B observability, option C verifiability, option D value based. The question number 30 ର correct answer ହେଉଛି the central theme of behavioralism doesn't adopt value based. Question number 30 ପରେ question number 31 କ'ଣ ପଚାରୁଛି who is called the father of liberalism. Who is called the father of liberalism? Option A Mill, option B Locke, option C Kant ଏବଂ option D Hobbes. Okay, the question number 31 ର correct answer ହେଉଛି Locke is called as the father of liberalism. Okay, question number 31 ପରେ ଆମେ next question ଆଡ଼କୁ ଯିବା. question number 32 କ'ଣ ପଚାରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଗରେ ମୁଁ question number 32 ରଖୁଛି ଯେଉଁ question ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି who said the criticism of religion is the beginning of all criticism. The criticism of religion is the beginning of all criticism. Option A Gandhi, option B Lenin, option C Rousseau, option D Marx. According to or among the following options who said the criticism of religion is the beginning of all criticism. Okay, the question number 32 ର correct answer ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ according to Karl Marx the criticism of religion is the beginning of all criticism. question number 32 ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା question number 33 କ'ଣ ପଚାରୁଛି according to Marx surplus value arises from. According to Marx surplus values arises from. Option A government tax, option B market exchange, option C unpaid labor of the workers, option D circulation of commodities. Okay, the question number 33 ର correct answer ହେଉଛି according to Marx surplus values arises from unpaid labor of the workers. Okay, the question number 33 ପରେ ଆମେ next question ଦେଖିବା question number 34 କ'ଣ ପଚାରୁଛି ତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଗରେ ମୁଁ question number 34 ରଖୁଛି. ତ question number 34 ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି who said war is the midwife of the world revolution. Who said war is the midwife of the world revolution? Option A Lenin, option B Mao, option C
Gramsci, option D, Karl Marx. Lenin, Mao, Gramsci, Marx, who said, war is the midwife of the world revolution. Okay, the question number 34 correct answer ହେଉଛି according to Lenin, Lenin said, war is the midwife of the world revolution. Question number 34 ପରେ question number 35 ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି in the Manusmriti, which chapter primarily deals with the nature of the state and the duties of the king? In the Manusmriti, which chapter primarily deals with the nature of the state and the duties of the king? Option A, chapter 8, option B, chapter 7, option C, chapter 6 এবং option D, chapter 5th. Okay, the question number 35 ର correct answer ହେଉଛି option B. In the Manusmriti, chapter 7 primarily deals with the nature of the state and the duties of the king. Question number 35 ପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ next question ଆଡ଼କୁ ଯିବା. Question number 36 କ'ଣ ରହୁଛି? The question number 36 ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି among the following scholars who is generally regarded as the intellectual godfather of behavioral political science? According to the following among the following scholars who is generally regarded as the intellectual godfather of behavioral political science? Option A, David Easton, option B, Arthur Bentley, option C, Charles C. Merriam এবং option D, Graham Wallas. Okay, the question number 36 ର correct answer ହେଉଛି Charles E. Merriam, who is generally regarded as the intellectual godfather of behavioral political science. Question number 36 ପରେ question number 37 ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି identify the incorrect statement regarding Gandhiji's introduction of religion into politics. Option A, walk in the fear of God and to be afraid of man. Option B, have the unshakable faith in the end, right alone will triumph. Option C, let one stop be enough for you, don't long to see into the distant future. Option D, let you and your country have the moral courage. Among the following options, identify the incorrect statement regarding Gandhiji's introduction of religion into politics. Okay, the question number 37 ହେଉଛି ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ଭିତରୁ incorrect option according to regarding Gandhiji's statement, a walk in the fear of God and be afraid of man. Okay, question number 37 ପରେ question number 38 କ'ଣ ପଚାରୁଛି who among the following was primary social reformer responsible for the abolition of sati pratha? Who among the following was the primary social reformer responsible for the abolition of sati pratha? Option A, Raja Raman Roy, option B, Swami Vivekananda, option C, Ram Manohar Lohia, option D, Rabindranath Tagore. Okay, the question number 38 ର correct answer ହେଉଛି Raja Raman Roy was the primary social reformer responsible for the abolition of sati pratha. Question number 38 ପରେ next question number 39 କ'ଣ ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗତକାଲିର ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛି CPET Political Science 2026. Question number 39 ପଚାରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ. Question number 39. In Nehru's thought, nationalism must be harmonized with. In Nehru's thought, nationalism must be harmonized with. Option A, imperialism. Option B, religious supremacy. Option C, fascism. Option D, global cooperation. Okay, the question number 39 ର correct answer ହେଉଛି in Nehru's thought, nationalism must be harmonized with global cooperation. Okay, the question number 39 ପରେ ଆମେ next question ଆଡ଼କୁ ଯିବା. Question number 40 କ'ଣ କହୁଛି? Question number 40 ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି. ତା ପୂର୍ବରୁ ଡେଫିନେଟଲି ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିବ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ. ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କେଉଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜୁନିୟର ହୁଅନ୍ତୁ, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ +2 ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ବା +2ର ଅଦର ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି, ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଚ୍ୟାନେଲ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ. ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ରିଲେଟେଡ୍ ଆମେ ସମସ୍ତ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ. ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଡେଫିନେଟଲି ସେୟାର କରନ୍ତୁ. କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 40 କ'ଣ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଗରେ ରଖୁଛି. କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 40. Pandita Ramabai traveled to which country to study and raise funds for opening a home for high caste Hindu widows in India? Pandita Ramabai traveled to which country to study and raise funds for opening a home for high caste Hindu widows in India? Option A, Germany. Option B, France. Option C, Russia.
ऑप्शन डी यूएसए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 40 रो करेक्ट आंसर होची पंडिता रमाबाई ट्रैवल टू यूएसए to study and raise funds for opening a home for high caste Hindu widows in India. Question number 40 पर question number 41 कौन पचारुछि? The four pillar state of Lohia included power distribution among. The four pillar state of Lohia included power distribution among army, police, parliament, judiciary. Option B, capitalist, peasant, bureaucrats, workers. Option C, legislature, executive, judiciary, media. Option D, center, state, district and village. Okay, the question number 41. Now, correct answer होची the four pillar state of Lohia included power distribution among center, state, district and village. Question number 42 कौन पचारुछि? According to Manu, Brahmins perform three functions in society. Which one is incorrect? According to Manu, Brahmins perform three functions in society. Which one is incorrect? Option A, teacher, protector, preacher, advisor. Okay, the question number 42 ର correct answer ହେଉଛି according to Manu, Brahmins performs three functions, that is teacher, preacher, advisor but not protector. The correct answer ହେଉଛି 42 ର option B. तो question number 42 ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ next question ଆଡ଼କୁ ଯିବା. question number 43 କ'ଣ କହୁଛି? ତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଗରେ ମୁଁ question number 43 ରଖୁଛି. ଯେଉଁ question ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି 43, who was the leading advocate of the view that public administration differs fundamentally from private administration? Who was the leading advocate of the view that public administration differs fundamentally from private administration? Option A, Appleby. Option B, Gass. Option C, Drucker. Option D, Luther Gallig. Okay, the question number 43 ର correct answer होची Paul H. Appleby was the leading advocate of the view that public administration differs fundamentally from private administration. Question number 43 ପରେ question number 44 ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି Herbert A. Simon's contribution is significant in the field of. Herbert A. Simon's contribution is significant in the field of. Option A, communication. Option B, decision making. Option C, leadership. Option D, authority. Okay, the question number 44 ର correct answer ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ Herbert Simon's contribution is significant in the field of decision making. Question number 44 ପରେ question number 45 କ'ଣ ପଚାରୁଛି? The findings of the Hawthorne experiment are discussed in. The findings of the Hawthorne experiment are discussed in. Option A, management and the worker. Option B, management and the moral. Option C, management and the work. Option D, management and the labor. Okay, the question number 45 for correct answer होची the findings of the Hawthorne experiments are discussed in management and the worker. Question number 45 ପରେ ଆମେ next question ଆଡ଼କୁ ଯିବା. question number 46 ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପଚାରୁଛି? ତ question number 46 ପଚାରୁଛି which of the following is not a contribution of F.W. Taylor? Option A, shop management. Option B, a piece rate system. Option C, work and authority in industry. Option D, principle of scientific management. Okay, the question number 46 the correct answer होची among the following four option C, work and authority in industry is not a contribution of Frederick William Taylor, the father of scientific management theory. Okay, question number 46 ପରେ question number 47 କ'ଣ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଗରେ ମୁଁ question number 47 ରଖୁଛି. ଯେଉଁ question ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି who was the chief architect of new public administration movement? Who is the chief architect of new public administration movement? Option A, Robert T. Golembowski. ଟିକେ pronunciation ରେ problem ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, adjust କରନ୍ତୁ. C.I. Bernard. Option D, option C, Dwight Waldo. Option D, F.M. Marx.
तो क्वेश्चन नंबर 47 नो करेक्ट आंसर होची न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चीफ आर्किटेक्ट होचंती डुइट वाल्डो। क्वेश्चन नंबर 48 कोन पचारुची हु कॉइन न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हु कॉइन द टर्म न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, सॉरी न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। ऑप्शन ए क्रिस्टोफर हुड, ऑप्शन बी जेम गस, ऑप्शन सी ए मास्लो, ऑप्शन डी एफ जे गुडनाउ। तो क्वेश्चन नंबर 48 रो करेक्ट आंसर होची आपण मानक पई क्रिस्टोफर हुड coined the term new public management. Question number 48 ପରେ question number 49 କ'ଣ ପଚାରୁଛି? The modern international state system is conventionally dated from. The modern international state system is conventionally dated from. Option A Congress of Vienna 1815, option B Peace of Westphalia 1648, option C Treaty of Versailles 1919, option D UN Charter 1945. Okay, the question number 49 the correct answer to the modern international state system is conventionally dated from Peace of Westphalia 1648. Question number 49 पर आमे नेक्स्ट क्वेश्चन आडको छिबा क्वेश्चन नंबर 50 कोन होची तो आपनक स्क्रीन आगे हम क्वेश्चन नंबर 50 रखुची जो क्वेश्चन आपनको पचारुची क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 आपको पचारुची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर। ऑप्शन ए ह्यूमन राइट वॉच, ऑप्शन बी द न्यूयॉर्क टाइम्स, ऑप्शन सी अंगोला, ऑप्शन डी एशियन। तो 50 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर छ अंगोला गोटे स्टेट तो इट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर एटा गोटे स्टेट रो एग्जांपल गोटे कंट्री रो ना तो ह्यूमन राइट्स वॉच हो द न्यूयॉर्क टाइम्स हो एशियन हो ए सब आपण मानकर एग्जांपल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर बट अंगोला इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर। क्वेश्चन नंबर 51 कोन पचारुची हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द 20-year क्राइसिस 1939। ऑप्शन ए वाल्ट्स, ऑप्शन बी मर्गेनथाउ, ऑप्शन सी स्केलिंग एवं ऑप्शन डी ईएच कार। ओके तो क्वेश्चन नंबर 51 करेक्ट आंसर होची आपण मानक पई ईएच कार इज द ऑथर ऑफ द बुक द 20-year क्राइसिस 1939। से बळे क्वेश्चन नंबर 52 कोन पचारुची हु among the following stated the law of politics is rooted in human nature which is self-seeking, self-interested and power-loving। ऑप्शन ए ईएच कार, ऑप्शन बी केनेथ वाल्ट, ऑप्शन सी हंस मर्गन्थो, ऑप्शन डी जे मर्सिम्योर। तो क्वेश्चन नंबर 52 रो करेक्ट आंसर होची आपण मानक पई among the following हंस मर्गन्थो stated the law of politics is rooted in human nature which is self-seeking, self-interested and power-loving। ओके तो क्वेश्चन नंबर 52 पर वर्तमान में नेक्स्ट क्वेश्चन आडको छिबा क्वेश्चन नंबर 53 कोन पचारुची। ओके तो क्वेश्चन नंबर 53 आपको पचारुची हु टुक द पायोनियरिंग एफर्ट्स थ्रू हिज कंट्रीब्यूशन न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स in early 1920s towards the growth of behavioralism, who took the pioneering efforts through his contribution new aspect of politics in early 1920s towards the growth of behavioralism। option A J.B. Watson, option B David B. Truman, option C Charles C. Merriam, option D Paul F. Lazarsfeld। ओके तो क्वेश्चन नंबर 53 रो करेक्ट आंसर होची चार्ल्स सी मेरियम। ओके क्वेश्चन नंबर 53 पर क्वेश्चन नंबर 54 कोन रही देखिबा। ओके तो क्वेश्चन नंबर 53 पर वर्तमान हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 54 कोन रहउची। तो क्वेश्चन नंबर 54 आपनको पचारुची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट ए बेसिक assumption of liberalism in intellectual relations। option A absolute state sovereignty, option B the inevitability of conflict, option C mutual benefits and international cooperation, option D balance of power। among the following options which of the following best represent a basic assumption of liberalism in international relations। ओके तो क्वेश्चन नंबर 54 करेक्ट आंसर होची ऑप्शन सी mutual benefits and international cooperation best represent a basic assumption of liberalism in international relations। ओके क्वेश्चन नंबर 54 पर आमे वर्तमान देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 55 कोन पचारुची which of the following statement is not true in relation to World War I। which of the following statement is not true in relation to World War I? option A it began with the assassination of the heir to the British throne, option B it was fought between
to main coalition, the Allied powers and the Central powers. Option C, the United States officially entered the conflict on April 6, 1917. Option C, the war formally concluded with the signing of the Treaty of Versailles in 1919. Which of the following statement is not true in relation to World War One? Okay, the question number 55 ର correct answer ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ option A. It is begun with the assassination of the heir to the British throne is not true in relation to World War. ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ରିଲେଟେଡ୍ ଯାହା ବି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି B, C, D ତିନିଟାଙ୍କ କରେକ୍ଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟି ଇନକରେକ୍ଟ. ଓକେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 55 ପରେ 56 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଗରେ ମୁଁ ରଖୁଛି. କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 56 ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, the international system during the Cold War era was. The international system during the Cold War era was unipolar, bipolar, multipolar, D non-polar. Okay, the question number 56 ର correct answer ହେଉଛି the international system during the Cold War was bipolar. Question number 56 ପରେ question number 57 କ'ଣ ପଚାରୁଛି, which political ideology believes that the individual in the literal sense is nothing? Which political ideology believes that the individual in the literal sense is nothing? Option A, liberalism. Option B, socialism. Option C, fascism. এবং option D, anarchism. Okay, the question number 57 ର correct answer ହେଉଛି fascism believes that the individual in the literal sense is nothing. Okay, question number 57 ପରେ question number 58 କ'ଣ ପଚାରୁଛି, feminist critic of mainstream international relation claim that the discipline is heavily shaped by. Feminist critic of mainstream international relation claim that the discipline is heavily shaped by. Option A, environmentalism. Option B, masculinist assumption. Option C, post-colonial ethics. Option D, legal positivism. Okay, the question number 58 ର correct answer ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ option B, masculinist assumption is the correct answer. Question number 58 ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା next question. Question number 59 କ'ଣ ରହୁଛି, ତ question number 59 ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ଟିକେ pronunciation ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି. Kimberly Crenshaw describe the concept of intersectionality as option A, biological difference between sexes. Option B, uniform female experience. Option C, overlapping system of operation. Option D, electoral participation. तो क्वेश्चन नंबर 59 ना करेक्ट आंसर होची आपनकर ओवरलैपिंग सिस्टम ऑफ ऑपरेशन. ओके, क्वेश्चन नंबर 59 पर आमे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा. क्वेश्चन नंबर 60 मते टिके लागिला क्वेश्चन एक्चुअली मु कोटी पढिबा भलिया मते लागलन मे बी थिबो मु कोटी स्किप करि जाइथिबे क्वेश्चन टी. क्वेश्चन नंबर 60 आपनको पचारुची, the word socialist and secular were added to the preamble of the Indian Constitution by. Option A, 42nd Amendment. Option B, 44th Amendment. Option C, 52nd Amendment. Option D, 73rd Amendment. Okay, the question number 60 ର correct answer ହେଉଛି 42nd Amendment. Okay, question number 60 ପରେ question number 61 ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, which of the following article deal with the amendment of the Indian Constitution? Which of the following articles deals with the amendment of the Indian Constitution? Article 367, 368, 386, 356. Okay, the question number 61 ର correct answer ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ option B, article 368 deals with the amendment of the Indian Constitution. Question number 61 ପରେ ଆମେ ଏବେ next question ଆଡ଼କୁ ଯିବା. question number 62 କ'ଣ ରହିଛି, ତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଗରେ ମୁଁ question number 62 ରଖୁଛି. ଯେଉଁ question ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, which of the following statement about the Rajya Sabha বা Council of States is incorrect? Incorrect ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଛି. Option A, it is a permanent house and it is not subject to dissolution. Option B, 1/3 of its member retire every 2 years. Option C, money bills can be introduced in the Council of States. Option D, it represents the state of the Indian Union. Okay, the question number 62 ର correct answer ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ money bill. जो option C ଅଛି, money bill can be introduced in the Council of States. No, money bill only introduced in Lok Sabha. Okay, question number 62 ପରେ question number 63 କ'ଣ ପଚାରୁଛି, which of the following pair is correctly matched with regard to fundamental
rights? Option A, Article 14, right to freedom. Option B, Article 19, right to equality. Option C, Article 21, protection of life and personal liberty. Option D, Article 25, cultural and educational rights. Okay, तो क्वेश्चन नंबर 63 रो करेक्ट आंसर छि आपण मानक पई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच जोटा आपण को पई रहउछि सेटा होछि आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड जेते सारा आर्टिकल थला ए गोटी आर्टिकल आपण को करेक्टली मैच करूछि। क्वेश्चन नंबर 64 कोन पछरुछि द कांसेप्ट ऑफ बिहेवियरिज्म वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय द कांसेप्ट ऑफ behavioralism no it behaviorism was originally developed by Cattell, J.B. Watson, Skinner, Key. Okay, the question number 64 the correct answer is option B, J.B. Watson originally developed this concept. Okay, 64 ପରେ 65 कौन होची आपन को स्क्रीन आगे मो 65 रखुची। Which of the following is correctly matched regarding borrowings in the Indian Constitution? Featured borrowed कोटा को कंट्री अणा जाइछि यूएसए रु पार्लियामेंटरी सिस्टम, यूएसएसआर रु फंडामेंटल ड्यूटीज, यूके रु जुडिशियल रिव्यू, स्विट्जरलैंड रु डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी कोटा करेक्टली मैच करूछि। तो आपण माने जानथो गोटी क्वेश्चन आपण देख एठी देखि पारुथबी करेक्टली आपण मानक पय मैच करूछि सेटा होछि फंडामेंटल ड्यूटीज आउ कोटा भी मैच करनी कारण पार्लियामेंटरी सिस्टम हम यूके ठु आनिचे, जुडिशियल रिव्यू हम यूएस ठु आनिचे, डीपीएसपी हम आयरलैंड ठु आनिचे। ओके 65 पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 66 कोन कहूची। तो क्वेश्चन नंबर 66 आपन को स्क्रीन आगरे क्वेश्चन नंबर 66 कोन होची क्वेश्चन नंबर 66 देखिबा व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू क्वेश्चन नंबर 66 पचारुची व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू। फर्स्ट ऑप्शन दोची द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। Option B, the power of the judiciary to examine the constitutional validity of laws and executive actions. Option C, the power of the president to return a bill for reconsideration. Option D, the power of the council of ministers to frame policies. Okay, the question number 66 the correct answer is the power of the judiciary to examine the constitutional validity of laws and executive actions is known as judicial review. Question number 67 कोन पचारुछि the ultimate aim of Plato's education is the ultimate aim of Plato's education is option A, encourage trade, option B, produce philosopher kings, option C, military strength, option D, strength the family life. Okay, jar correct answer होछि आपण मानक पई option B, produce philosopher king is the ultimate aim of Plato's education. Question number 68 कोन पचारुछि GST was introduced by which amendment? 101 amendment, 42nd amendment, 73 amendment, 102 amendment. तो 68 रो करेक्ट आंसर होची 101 नंबर जो संविधान संशोधन नथिला ता द्वारा गुड एंड सर्विस टैक्स इंडिया रे इंट्रोड्यूस करा जायथिला। क्वेश्चन नंबर 68 परे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 69 कोन होची। स्क्रीन आगे मैं क्वेश्चन नंबर 69 रखी जो क्वेश्चन आपको पचारूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट पंचायत राज इंस्टीट्यूशन। ऑप्शन ए दे प्रोवाइड आप पढ़ीदेवे ऑप्शन गुड़ाक जार करेक्ट आंसर मुझे कहीदे कौन था जार करेक्ट आंसर था ऑप्शन डी दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल बाय द 74th। तो पंचायत राज 74th न पंचायत राज होती 73 जदि आपको पचार अर्बान कथा ताहले सेटा 74th होता एटा 73। 70 नंबर क्वेश्चन कौन पचारूँ द मल्टी पार्टी सिस्टम इन इंडिया प्रमोट्स। ऑप्शन ए अथॉरिटेरियनिज्म, ऑप्शन बी पॉलिटिकल प्लुरलिज्म, ऑप्शन सी वन पार्टी रूल, ऑप्शन डी मिलिटरी इंटरवेंशन। तो क्वेश्चन नंबर 70 रो करेक्ट आंसर होची द मल्टी पार्टी सिस्टम इन इंडिया प्रमोट्स पॉलिटिकल प्लुरलिज्म। ओके क्वेश्चन नंबर 70 पर वर्तमान क्वेश्चन नंबर 71 कौन पचारिछि। क्वेश्चन नंबर 71 आपनको स्क्रीन आगे मु रखुछि। Identify the incorrect feature of Aristotle's ideal state. Option A, it consists of small city states. Option B, the size of the territory of ideal states should be such for people to live free and leisure life. Option C, it is dominated by the upper class. Option D, it focuses on right to private property as a natural institution. Identify the incorrect feature of Aristotle's ideal state.
ओके तो क्वेश्चन नंबर 71 करेक्ट आंसर होची इट इज डोमिनेटेड बाय द अपर कास्ट एटा होची इनकरेक्ट फीचर ऑफ अरिस्टोटल्स आइडियल स्टेट 71 परे आमे क्वेश्चन नंबर 72 देखिबा कोन पचारुची तो आपनक स्क्रीन आगे मैं क्वेश्चन नंबर 72 रखी क्वेश्चन नंबर 72 मु रखुची जो क्वेश्चन आपनको पचारुची द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट MCC becomes operational option A after the election result, option B after parliament's approval, option C from the date of the election announcement, option D during the budget session. तो आपनकर कोड ऑफ कंडक्ट केबे यूज हुए केबे लागू हुए फ्रॉम द डेट ऑफ इलेक्शन अनाउंसमेंट जेबेटू इलेक्शन पई डेट अनाउंस हेजिवो सेबेटारु आपन कोड ऑफ कंडक्ट लागू हेजिवो क्वेश्चन नंबर 73 कोन पचारुची ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वासी जुडिशियल फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑप्शन ए डिसाइडिंग डिस्प्यूट रिलेटिंग टू पार्टी स्पिल्स एंड सिंबल एलोकेशन ऑप्शन बी एडवाइजिंग द प्रेसिडेंट ऑन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑप्शन सी enforcing the model code of conduct during election, option D disqualifying candidate for failure to submit election expenditure accounts. Okay, the question number 73 ର correct answer होची option C enforcing the model code of conduct during election is not a quasi judicial function of the election commission of India. Question number 73 ପରେ question number 74 କ'ଣ ପଚାରୁଛି now which of the following is not an example of affirmative action in India? Option A reservation of seats for scheduled caste and scheduled tribe in legislature, option B reservation for women in panchayat raj institution, option C implementation of universal adult franchise, option D reservation in public employment for other backward classes. Okay, तो क्वेश्चन नंबर 74 करेक्ट आंसर होची ऑप्शन सी. ओके तापर देखिबा क्वेश्चन नंबर 75 कोन रहउची तो आपनक स्क्रीन आगे मैं क्वेश्चन नंबर 75 रखुची जो क्वेश्चन आपनको पचारुची which of the following article deal with election commission of India? Article 280, article 324, article 356, article 368. ओके आपण ऑप्शन एलिमिनेशन करंतु आर्टिकल 280 हमर फाइनेंस कमिशन 356 हमर स्टेट इमरजेंसी थिला प्रेसिडेंशियल रूल 368 हमर आपण देखुतिले हमर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिलेटेड आ 324 होची करेक्ट आंसर. ओके 75 पर आम नेक्स्ट क्वेश्चन आड़ को जावा क्वेश्चन नंबर 76 कौन पचारुची ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया. तो जिते सारा आपण पढ़ी पारिबे जार करेक्ट आंसर मु कहि दोची कोन अछि ऑप्शन सी द इलेक्शन कमिशन हैज द पावर टू डिसॉल्व द लोकसभा इफ सीरियस इरेगुलरिटीज आर फाउंड इन द इलेक्शन प्रोसेस. इटा इलेक्शन कमिशन को पावर ना इटा प्रेसिडेंट को पावर. ओके क्वेश्चन नंबर 76 पर आम नेक्स्ट आड़ को जावा क्वेश्चन नंबर 77 कौन रहउची. ओके तो क्वेश्चन नंबर 77 कौन पचारुची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट रिगार्डिंग द रिकग्निशन ऑफ ए नेशनल पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया. इनकरेक्ट जो पचारिछि मु आपन स्टेटमेंट गुडी पढ़ी देबे मु तार करेक्ट आंसर खाली कहि दोची ऑप्शन डी होची करेक्ट आंसर कारण सबु जांक स्टेटमेंट आपनकर करेक्ट अछि केवल गोटी स्टेटमेंट करेक्ट नै इन ए पॉलिटिकल पार्टी इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए नेशनल पार्टी इफ सिक्योर एटलीस्ट 5% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स इन द कंट्री इन जनरल इलेक्शन. द 5% नो इटा होची 4%. ओके क्वेश्चन नंबर 27 आम देखुले बर्तमान क्वेश्चन नंबर 20 क्षमा करेंगे 77 देखुले बर्तमान क्वेश्चन नंबर 78 देखा कौन आपण पचारुची क्वेश्चन नंबर 78 जो क्वेश्चन आपन को पचारुची क्वेश्चन नंबर 78 पचारुची 78 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग डिटरमिनेंट ऑफ वोटिंग बिहेवियर. ऑप्शन ए द स्लोगन गरीबी हटाओ वाज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस voting behavior in 1971. Option B class based voting behavior is often shaped by economic interest and material condition of voters. Option C economic issues such as price rise and employment rarely influence voting behavior. Option D in India caste and class often interact in influencing voting behavior. Okay तो question number 78 रो आपण मानकर करेक्ट आंसर होची economic issues such as price rise and employment rarely influencing voting behavior. Question number 78 परे आमे नेक्स्ट क्वेश्चन आड़ को जीवा क्वेश्चन नंबर 79 आपण मानको कोन पचारुची क्वेश्चन नंबर 79 आमे देखिबा तो क्वेश्चन नंबर 79 आपण को पचारुची which of the following statement is incorrect regarding the system approach in comparative politics. Option A it
analyzes political processes in terms of demands and supports flowing into the political system. Option B, the system approach conceptualize the political system as a set of interrelated structure operating within an environment. Option C, the system approach emphasizes feedback mechanism through which output influence subsequent inputs. Option D, it was significantly influenced by Gabriel Almond's input-output model. तो क्वेश्चन नंबर 79 जो इनकरेक्ट रिगार्डिंग सिस्टम अप्रोच था जार करेक्ट आंसर होची ऑप्शन डी. ओके, क्वेश्चन नंबर 79 पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 80 कौन पचारुची. तो क्वेश्चन नंबर 80 आपनक स्क्रीन आगे रखुची जो प्रश्न आपनको पचारिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द सोशियो कल्चरल ग्लोबलाइजेशन. ऑप्शन ए, इंग्लिश हैज emerged as a global language of communication. Option B, cultural diversity has completely disappeared due to globalization. Option C, socio-cultural globalization promotes cultural exchange and hybridization across societies. Option D, advances in communication technologies have accelerated cross-cultural interaction and the spread of ideas. तो क्वेश्चन 80 रो जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट रिगार्डिंग सोशियो कल्चरल थिला जार करेक्ट आंसर होची ऑप्शन बी, cultural diversity has completely disappeared due to globalization. Option completely no, आमे कहि परे disappeared but not completely. Option 81 कहूची which of the following statement is incorrect regarding the Constitution of the United States. Option A, it was framed by Philadelphia Convention of 1787. Option B, it originally consisted of only 17 articles. Option C, the ideas of the John Locke significantly influenced its philosophy. Option D, it establishes a federal system of government. Which of the following statement is incorrect regarding the Constitution of the United States? The question number 81 correct answer होची it originally consisted of only 17 articles. It is the incorrect regarding Constitution of the United States. Okay, क्वेश्चन नंबर 81 पर आमे क्वेश्चन नंबर 82 देखिबा कोन पचारि छै. तो क्वेश्चन नंबर 82 आपन को पचारुछि The Bill of Rights USA includes how many amendments in total? The Bill of Rights of United States of America includes how many amendments in total? Option A 7, option B 10, option C 12 এবং option D 17. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 82 रो आपण मानकर करेक्ट आंसर होची ऑप्शन बी टोटल 10 अमेंडमेंट्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 83 कोन पचारुछि The National People's Congress NPC is the highest executive body in China, highest judicial authority in China, highest organ of state in power in China. Option D, advisory body to the Communist Party. Okay, the question number 83 रो correct answer होची the National People's Congress NPC is the highest organ of state power in China. Question number 84 कोन पचारुछि The concept of civic culture refers to. The concept of civic culture refers to option A, purely parochial political orientation. Option B, purely subject political orientation. Option C, purely participant political orientation. Option D, a balanced mixture of parochial, subject and participant orientation. The question number 84 correct answer होची the concept of civic culture refers to a balanced mixture of parochial, subject and participant orientation. Question number 84 पर आमे एबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो क्वेश्चन नंबर 85 कोन रहउची. तो क्वेश्चन नंबर 85 आपन को पचारुची which of the following is not a feature of a federal system of government? Option A, division of powers between the center and the states. Option B, supremacy of the constitution. Option C, concentration of all powers in the central government. Option D, independent judiciary. तो क्वेश्चन नंबर 85 पर आपण मानकर करेक्ट आंसर होची not a feature of federal system of government concentration of all powers in the central government. एटा concentration काहे के हबो कारण फेडरल सिस्टम रे पावर डिस्ट्रीब्यूशन हबो. क्वेश्चन नंबर 86 रो करेक्ट आंसर होची which of the following statement is not true regarding the fast past the post electoral system? Option A, the candidate securing the highest number of votes in constituency is declared elected. Option B, it requires the candidate to secure more than 50% of total votes to win. Option C, it is also known as the plurality system.
Option D, it is used in countries like India and the United Kingdom. Okay, the question number 86 जो लिखला not uh, regarding that is option 86 the correct answer होची option B. It requires a candidate to secure more than 50% of the total votes to win. It is not statement is not true regarding the first past the post electoral system. Question number 86 ପରେ ଆମେ next question ଆଡ଼କୁ ଯିବା. Question number 87 କ'ଣ ପଚାରିଛି? ତ question number 87 ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଗରେ ମୁଁ ରଖୁଛି. In related to SOR model used in behavioral and political psychology, analysis identify the incorrect statement. The incorrect statement ଆପଣଙ୍କର 87 ର correct answer ହେଉଛି ଆପଣ ପଢ଼ି ଦେବେ. ମୁଁ correct answer ଖାଲି କହି ରଖୁଛି. Option C, SOR model create human a passive recipient is the incorrect statement. ସେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା question ଅଛି ଆପଣ ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ. ମୁଁ ତାର କେବଳ answer ଟି ହିଁ କହି ଦେଉଛି. Question number 88 ର जो क्वेश्चन आपनकर थिला, which of the following statement is incorrect regarding the right to information act 2005? Incorrect question पचारिथिला जार करेक्ट आंसर मु कहूची आपनको. अंडर द RTI Act an applicant can demand an explanation, justification, reason for administrative decision beyond the material available on record. एटा होची incorrect statement. ओके, 88 परे आमे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा. 89 कोन पचारुची? तो क्वेश्चन नंबर 89 आपनको स्क्रीन आगे मु रखुची. 89 पचारुची. The concept of Lokpal in India was first recommended by option A, ARC 1966, option B, Sarkaria Commission, option C, Santhanam Committee, option D, Law Commission of India. Okay, the question number 89 आपनकर correct answer होची option A, ARC 1966 first recommended the concept of Lokpal. Okay, question number 89 पर question number 90 कौन पचारुची? The right to education was made a fundamental right by which constitutional amendment? 42nd, 86th, 44th, 73rd. The question number 90 ର correct answer होची option B, 86th amendment. Okay, 90 question ପରେ ଆମେ 90 नंबर ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 91 ଦେଖିବା କ'ଣ ପଚାରିଛି. Which of the following question number 91, which of the following is correctly matched regarding constitutional writ? तो मु आपण पढ़ी दियंतो मु तार करेक्ट आंसर कहि रखुची कोन हबो. 91 करेक्ट आंसर होची ऑप्शन सी, statutory to quash the order of lower court, tribunal or quasi judicial authority. करेक्टली मैच करूची केवल ऑप्शन सी. ओके, 91 करेक्ट आंसर. 92 कोन पचरितला? द प्रिंसिपल ऑफ नॉन refoulement in international refugee law means. Our correct answer mu कहि रखुची कोन हबो ना, refugees can't be forcibly returned to a country where they face persecution. Okay, 92 परे अदर सेंटेंस 8 पॉइंट मु पढुनी 100 टा क्वेश्चन ऑलरेडी मु पढी सारी छी. आपण माने केवल क्वेश्चन आंसर जानंतु. 93, the UN framework convention on climate change UNFCCC was adopted at Stockholm Conference 1972, Rio Earth Summit 1992, Kyoto Conference 1997, Paris Conference 2015. तो क्वेश्चन नंबर 93 रो करेक्ट आंसर होची आपनकर रियो अर्थ समिट 1992 रे आपनकर यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज वाज अडॉप्टेड. 94 कोन पचारुची ना, द मी टू मूवमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑप्शन ए, a nationalist movement, a labor union movement, a transitional feminist movement, a regional autonomy movement. The question number 94 correct answer होची a transitional feminist movement. Question number 94 परे आमे वर्तमान क्वेश्चन नंबर 95 आड़कू जीवा. तो क्वेश्चन नंबर 95 कौन पचारुची? क्वेश्चन नंबर 95, which of the following is incorrect regarding the Bretton Woods Conference? तो 95 रो मु आपनको कहि दउची कोटा इनकरेक्ट अछि. इनकरेक्ट तार करेक्ट आंसर होची ऑप्शन सी, इट क्रिएटेड द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन टू रेगुलेट ग्लोबल ट्रेड. WTO को ये क्रिएट करि नथले. इट इज एन इनकरेक्ट रिगार्डिंग आमे कहि परिबा इनकरेक्ट आमे कहि परिबा रिगार्डिंग द ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस. ओके, क्वेश्चन नंबर 95 पर वर्तमान क्वेश्चन नंबर 96 देखिबा. क्वेश्चन पचारुची which of the following countries not recognized as nuclear weapon state?
जार करेक्ट आंसर अंडर द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1968 नॉट रिकॉग्नाइज ऑप्शन ए इंडिया। ओके क्वेश्चन नंबर 97 से भाई कौन पचारुचे क्वेश्चन नंबर 97 मु आपनक स्क्रीन आगे को क्वेश्चन नंबर 97 आणुची। तो क्वेश्चन नंबर 97 आपनको पचारुची व्हाट इज द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस आपण पढ़ी नेबे क्वेश्चन मु 97 करेक्ट आंसर कहूची व्हाट इज a 1962 confrontation between the USA and the Soviet Union over the installation of Soviet nuclear missiles in Cuba। 98 number question कौन पचारिथिला among the following statement identify which one of the characteristic is not based on political behavior analysis जहार करेक्ट आंसर आपण मानक पई रहउची ऑप्शन डी it holds the theoretical research propositions। ओके आउ दुईटी क्वेश्चन रहिला 99 आउ 100 नंबर क्वेश्चन म आपनक स्क्रीन आगे रखुची जो क्वेश्चन आपनको पचारिथिला 99 हु कॉइन्ड द नोशन ऑफ स्मार्ट पावर जोसेफ एस नाय सैमुअल पी हंटिंगटन हेनरी किसिंगर हांसे मार्गान्थो। तो क्वेश्चन नंबर 99 करेक्ट आंसर होची जोसेफ एस नाय आपनकर कॉइन द नोशन ऑफ स्मार्ट पावर। से भाव क्वेश्चन नंबर 100 देखिए कौन आपण पचारुची। ओके तो क्वेश्चन नंबर 100 आउ आज सेशन नंबर लास्ट क्वेश्चन आपण मानको कौन पचारुची लास्ट क्वेश्चन देखिबा Which of the following statement is incorrect regarding international terrorism? Option A, it may involve non-state actors. Option B, it can be linked to ideological, religious or political motivations. Option C, it always receives direct support from sovereign states. Option D, it exploits global peace and security. Okay, the statement is incorrect quote होचे option C, it always receive direct support from sovereign states. Okay, तो आशा करुच्ची गोटे लंबा समय धरी आम 100टा क्वेश्चन डिस्कसन करूँ आशा करुच्ची आज वीडियो आपको पसंद आसी सहित डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन जनातु आउट ऑफ 100 आपड़ केते एक्सपेक्टेड स्कोर करूँ एक्सपेक्ट केते रखुंट आदि वीडियो भल लगी तो निहत वीडियो को लाइक करूँ कमेंट करूँ शेयर करूँ आए पर्यटन यदि चैनल को सब्सक्राइब करना तो आपण फेवरेट चैनल एसएस ट्रिक्स को डेफिनेटली सब्सक्राइब करूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।